Hello, guys. So we are back with another live session in the growing markets. So welcome back again to A2Z Crypto. And if you're looking at us from any of the platforms like LinkedIn, YouTube, Twitter, welcome again. And do make sure that you follow us or subscribe to our channel so that you get this notifications of each week live session. So this week we are doing it at a very early time. Like we usually do it at 7:30, but for some reasons today we are just joining in for uh, at 5. You may call it due to the growing markets. We have to go back and trade. Shovik is busy nowadays, and Krish is like super busy, so he's not available sometimes. But we'll make sure that he to join in between. So with the good news for this week is like Bitcoin is above 60K. It touched 64K, and I think everyone's who is watching, if you have put in money till like when we were suggesting things or when we were talking for the last 5 6 months, you would be sitting at a good portfolio with a greener portfolio where you get a lot of more money. So we'll discuss more on that, like what are the latest news and updates, what is the positive things that you can see around, what are the new opportunities, and also the technical analysis where we'll say like okay, how Bitcoin is moving and what you can expect in the coming days for traders and investors both. So here with me we have Shavik, who will be Yeah, hi. co-hosting the show. And yeah, so in between, like if you have any questions for us, do mention it in the comments. We'll take it now or later also. If you're watching the replay, just make sure you just put it in the comments. We'll try to answer those questions. And yeah, so without further delay, let's just start the show and come up with the first news that we have for this week. Okay, so here it is. So with the growing markets, अभी जैसे सारा markets green है, so आप देख सकते हो कि Kraken has launched their new brand, which is dedicated for like institutions or hedge funds basically, where people can come in and buy large orders, OTC trades. And yeah, it's specifically dedicated for targeting Bitcoin ETF opportunities, so that institutions or hedge funds and asset managers can come in on their platform and do spot and over the counter trading. And I think in the future they will also have crypto staking in that as well. So it's like a very good move if you are using Kraken. So you can also use the new platform, and if you're an institution, it's a good uh, news for you, where you get an additional option where you can go in. And yeah, it will definitely increase the adoption of crypto. And I think this is a good place for institution to go and buy in these booming markets where the price is changing every seconds. So Yeah, with Shavik, this, what do you, yeah, 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 with this, I would like to say something like people or institutions, HNIs can trade in our platform also. So we have our OTC services as well. right. So those who are trading in India, they can go through our platform और वहाँ पे जाके OTC trades वगैरह पूछ सकते हैं वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट टीम से और OTC trades कर सकते हैं. So we always try to give competitive rates based on the market. So yeah, that's it. Yeah, so basically if you are outside India, so you can check out Kraken, or if you are in India, you can check out A2Z. And yeah, let us know like if you have a large quantity of buying or selling things, so we'll be happy to help you out and give you a good rate. So yeah, so that's it for this. And for the second news, I think it's about Serenity Shield liquidity wallet. So it has been compromised, and around 7 million worth of tokens, 7 million tokens has been taken out, and which value is approximately 400K. So Zach XBT, who is like a famous person on Twitter who keeps on exposing scams, so उन्होंने ये report किया that it is connected on chain to the recent OKX decks and concentric hacks as well. So he has also revealed the theft address.
So you can check it on the tweet. And yeah, so this is like negative news, you can say. With the rising markets, we also generally see that all this kind This of kind of frauds or scams yeah, keeps on happening. this kind of Yep. things happen. Actually, in the bull market, what happens with the price? It's like it's in the peak. So any scammer who has already access to some coins in any other platform, then he tries to sell it out in the market, or maybe उनको लेके ransom के लिए इसके लिए bargaining वगैरह करते हैं. But it's a part of the story. तो ये सब चीज होता रहेगा. बुल मार्केट में तो काफी ज्यादा दिखता है. Right. So yeah, so keep your funds safe, and that's all we can say. So with this, we have a very good news, which is mostly from India. So Avel, which is led by one of the early co-founders of Polygon, has secured around 27 million of seed funding round that was led by Founders Fund and Dragonfly Capital. So if you have not checked out Avel, so Avel is like a Web3 infrastructure layer that facilitates scalability and interoperable modular blockchains. So it's similar to somewhat of Celestia, you can say, if Yeah. have checked out Celestia. So it's somewhat similar, but with some Mhm. added functionalities maybe. And there are a lot of investors who have been investors and angels who have been part of this round. And yeah, so you can just go on and check out, because I think Avel was earlier part of the Polygon ecosystem, but now it's like an individual entity, and they have raised a quite good amount in the market. So just check them out. And if you, I think they were also running some node incentivized models before, so you can check them out, check their profiles, and see like if you can interact, because there may be a chance that you get a airdrop from them by interacting with their protocol or running nodes or etc on this. So do check them out, and this is like a good step. So we can finally say that the bull market is coming, with BTC going up, projects getting funded, and everything moving up and positive for everybody. So moving on to the next news. Okay, so I think this is like a dune.com, right? Yeah. Okay, Okay. so I I think am I took not able this to. wrong link. Yeah. So Yeah. okay, This so one. cool. This one is for June.com. Cool. So I was like, okay, so what is this? So no That worries. was So Espanol. You are not quite familiar with Espanol. I yes, know a little bit, but not that much. got it. So with this news, we are again on a good news that the Magic Eden Bitcoins market has hit record highs. Like in February, it reached around 100 million in trading volume and capturing around 2 million in fees. So the milestone was around 45,000 buyers were making NFT, like Bitcoin NFT purchases through the platform. And yeah, it's like moving up as BTC price is going up. Like Bitcoin ecosystem and Bitcoin NFTs, or you can say ordinals, are also seeing a very good surge, with some of the projects like getting more than 100% rise or 130% rise in the last 7 days once BTC started moving up. So yeah, so like it is a good news. You can see from all this data that in the last couple of days the markets have moved high, and all the metrics you can see is going a lot higher. So if anybody from the viewers is from the BTC NFT or Bitcoin ecosystem, or they trade NFTs or are into ordinals, you can check this out. This is like a very good sign that okay, the BTC 5 projects are moving and can have a very good future in the next coming bull run. Yeah, this link is actually quite useful. I would request our users to save this link and go through quite often so that they can get themselves updated and what's happening in the market. They can keep themselves Right. updated, basically. Yeah. Yes, I'll You just put the link okay? here. So if The anybody description. wants, they Yeah. can just check it out. Yeah. Okay. So moving on to the next news. I think this is about uh,
Okay, I think the earlier news was around the Spanish regulators. Okay, so Shravik, can we get back to the previous news? I think we just mixed up a bit. Sorry, guys. So okay, so this is like a news. So I'll just give a English version of it. So it's like just like we have the Indian regulators, जैसे कि FIU है India में. So the Spanish financial regulators have warned their investors about 18 unlicensed entities which is operating in their jurisdiction without a license. That these are like not the good exchanges or crypto firms, and there are some of the names also that are mentioned in the list. So if anybody is watching us from the Spanish jurisdiction, or if you are using it for some reason or the other, so be aware this is like some of the entities which are not licensed. And now after we see that all the jurisdiction is coming up with their own laws, when own set of rules and regulations, so it's good to comply with the government rules and trade or invest into platforms which are FIU compliant, just like A2Z crypto. So that you don't have to deal with some kind of problems, or you get your fund stuck due to some regulatory steps coming in. So it's always better to uh, transact through all this registered entities, not like unlicensed, unregistered entities from any jurisdiction. So Shavik, what do you have to say here? Yeah, definitely. Even in India also, यहाँ पे बहुत सारे exchanges है और स्पेशली कुछ कुछ एक्सचेंज है जो कि FIO रजिस्टर्ड है, तो इंडियंस या फिर बाहर से भी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में, स्पेशली आयना के अगेंस्ट में या फिर दूसरा Mhm. कॉइन्स में, या बेसिकली इंडियन प्लेटफॉर्म्स में या फिर इंडियन एक्सचेंज में, तो FIO रजिस्टर्ड जो कंपनीज है वो सब कंपनी के पीछे ही, मतलब वो सब कंपनी का प्लेटफॉर्म में ही उन लोगों को ट्रेड वगैरह करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक्चुअली क्या होता है, FIO कंप्लायंट होने के लिए काफ़ी सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फॉलो करना होता है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन जो है लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज रात अचानक से बैन हो गया तो फिर कल से मतलब आपका पूरा फंड जो है वो विथड्रॉल ब्लॉक हो जाएगा या फिर फंड होल्ड पे चला जाएगा। इस तरह से चीज़ होने का चांस कम है। तो Right. इसीलिए Okay. Yeah. So coming to the next news, Shavik, is this the news that we were targeting, or uh, से पहले कोई एक और न्यूज़ था? दिस Uh, दिस yeah. Right. So guys, we have gone through the order a little bit up and down. So sorry for that. So with this news, we are coming up with another you know reported by Zach XBT, which we have covered. So we came up with a lot of news and lot of hacks that has been exposed by Zach XBT. So here is another thing that he has reported, that there is a suspicious activity at a crypto exchange named Bitforex. So if you are using it, beware. So what he says is like on around February last, Bitforex experienced around 56 million or 55 million approx um, in outflows from its hot wallet, leading to a halt in withdrawals. And there was no official announcement from the exchange till now. So the CEO has also stepped down from his operations. So people don't know like what is happening inside, and also such a large volume of funds moving out from the hot wallets is a concern and blocking the withdrawals. So if you are using it, just be aware, and whenever you get to withdraw your funds, try to get the funds out of that wallet so that you don't get stuck. And yeah, so there are some of the largest transaction, like 18% of TRB supply and 7% of Omni supply is also there on the exchange. So repeatedly we have seen like and we have also told to our viewers that always try to use the bigger exchange and registered exchange from your jurisdiction, so that you don't get into something which is not licensed, and later on we have seen like many exchanges fall back which are not regulated, not complying with the laws, not following all the security protocols that exchange should do. So just be beware, and only
trust all the exchanges that are following the rules and not all the others which are not following it. So Shavik, this is which news? Okay, so we'll come on this one. So if you guys have been watching the L2 game, so it's mostly about Blast. So Blast is going mainnet for today, but there is a negative news before the mainnet as well. So there was a protocol called Risk on which was on Blast L2, and which did their first rug pull on Blast, uh, which like disappeared with 1 million plus with their pre-sale. So it's always better like you do your due diligence, and people always do like, okay, या drop मिलेगा या फिर I just put in money because it's gonna go up. So हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत बार हम लोग ड्यू डिलिजेंस देखना छोड़ देते हैं या नहीं करते. एंड ऑलवेज न्यू प्रोटोकॉल्स में मल्टीपल रिटर्न्स हो ऐसा जरूरी नहीं है. यू मे लूज योर ऑल मनी इनटू इट. सो दिस इज लाइक अ फर्स्ट केस. अभी हम लोग जैसे जैसे और भी बुल रन आगे बढ़ेगा, we'll see like more such cases where people just rug pulled or they just do a pre-sale and just vanish off. So this is it guys from my side. I think if you are using Blast, just make sure that you don't invest in any project that's coming on it. Just invest in good projects, and I think Blast will have a good blast today on mainnet. Mhm. Over to you, Shavik. Okay. Okay, guys, so I think we'll move to the part where which is most exciting for today, that you just see that okay, the mountains moving up, the green candles. It looks like Burj Khalifa now. Anytime, anytime anyone can fall from that cliff, top of that cliff. Right. ठीक है. तो इस वीक, लास्ट वीक जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बीटीसी 50 के जोन के आसपास था, 52 इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा था बीटीसी यूएसडीटी. तो इस वीक में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट का रीजन भी है जैसे हम लोगों ने बताया था वहां पे कि 50, 52, 53 ये जो जोन है, ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसको बार बार टेस्ट कर रहा है बीटीसी. और जैसे ही उसको तोड़ा तो वैसे देखिए कितना ये, एक्चुअली मैं एक चीज समझाना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को. यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ये डेली चार्ट है, ठीक है. यहाँ पे ये रैली था, फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग आप लोग कह सकते हो. उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ऑन प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है. थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ. तो मैंने मुझे याद है जहां तक मैंने कहा था कि यहाँ से जब रैली एक बार हो चुका है, तब आप लोग अगर एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको रिट्रेस हो जाने दो. सैम, आपको भी शायद याद होगा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. तो प्रेडिक्शन थोड़ा सा नीचे का था, बट ठीक है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है. तो ये प्राइस से बेटर ये थोड़ा सा नीचे वाला प्राइस है. जैसे 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाए, लेकिन छोटा छोटा रेड कैंडल्स बना है. उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बन के ये जो कैंडल है डिसाइसिवली ये ब्रेक किया है इस जोन को, ठीक है. उसके बाद ये फॉलो थ्रू कैंडल्स है. तो हम लोगों ने और एक बार टेक्निकल एनालिसिस के वक्त डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक कैंडल का पैटर्न बन रहा है और वो कोई एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फॉलो थ्रू वाला जो कैंडल है ना, उसका उस कैंडल में आपको एंट्री लेना है. कब लेना है? जब प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दे. मतलब यहाँ पे 55,000 आप लोग अगर तो 54,800 या फिर 55,000, तो वहां से अगर आप एंट्री लेते और उसका जो अगर आपका स्टॉप लॉस बोलोगे आप या फिर जो भी है, वो इसका 50% इस कैंडल का रखते, या फिर उस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसका 53, तो फिर नीचे 1,500 पॉइंट का ही था, 1,800 पॉइंट का, 1,500 पॉइंट का आप मान सकते हो कि स्टॉप लॉस. और गेन जो था वो काफी ऊपर तक गया है यहाँ पे 64, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 10,000 पॉइंट का गेन वहां पे था. तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो बन के आता है ना, वो काफी अच्छा बन के आता है. इसका रीजन भी ये है क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और ऐसा भी है कि शॉर्ट्स भी बन रहा है, ठीक है. रेजिस्टेंस जहाँ पे है ना, वहां पे बहुत सारा शॉर्ट्स जो है वो उसका एक्यूमुलेशन रहता है, और थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ मार्केट चला गया तो शॉर्ट्स का जो एसएल है, एसएल हंटिंग स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो है ये शॉर्ट कवरिंग रैली है, ये वाला.
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अगर मनी फ्लो इंडेक्स को देखोगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? मतलब एडिशनल मनी जो है सिस्टम में अभी प्रीवियस जितना आया था उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, शॉर्ट्स जो है वो धीरे-धीरे कटना स्टार्ट हो गया है। तो फिर जब तक मार्केट में या फिर यहाँ पे फ्रेश शॉट्स नहीं बनेंगे, तब तक बहुत जल्दी नीचे जाने का चांस नहीं है। तो आप लोग उसको भी थोड़ा बहुत मॉनिटर करते रहो, ठीक है? और भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स है, बॉलिंगर है, आप आरएसआई वगैरह देख सकते हो, ठीक है? आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, और जो आपका रेगुलर जो परसेंटेज गेन दे रहा है वो भी एक फॉलो कर सकते हो, जैसे 7 डेज कंपैरिजन चार्ट हो गया, डेली कंपैरिजन चार्ट हो गया, मंथली कंपैरिजन चार्ट हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल देख सकते हो आप। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है उसको एनालाइज करके आप संभाल के थोड़ा सा ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी एक मतलब रैली इस तरह से दिया है ना, बहुत जल्दी दिया है, 10% रैली कम नहीं है बीटीसी के लिए, लेकिन काफी जल्दी और काफी कम टाइम में दिया है। तो फिर शॉर्ट टाइम का ट्रेडर जो है वो तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? ये तो मतलब होना ही है। और लंबे लंबे निवेशक मतलब लंबे अवधि के निवेशक जो हैं वो यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करेंगे। इससे आगे एक दो लेवल और है, जैसे कि एक है 70,000 का लेवल, 68 टू 70,000 का लेवल। उसको अगर ब्रेक करता है बीटीसी तो आप ये मान के चलो कि वहां से 80,000 90,000 का अगर रैली आता है तो वो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? उसपे वहां पे टाइम ले लेगा। और सबसे ज्यादा हर्डल जो बीटीसी को मिलेगा ये 70,000 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर काफी लंबे टाइम तक बीटीसी उसी 5,000 6,000 रेंज के अंदर घूमता है, स्टे करता है, तो फिर आप ये जान के चलो कि वहां पे धीरे धीरे एकोमुलेशन चल रहा है। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ 50,000 जो है वो एक आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसको जब तक ब्रेक करके नीचे नहीं आता है तब तक आप लोग शॉर्ट साइड के मतलब शॉर्ट साइड पे मत बैठो या फिर मत देखो, नहीं तो खामा का लॉस हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं। और यहाँ आई पे थिंक जैसे हम लोग I think so. This is also about कि retail side से नहीं, it's mostly about institutions buying in यहाँ पे, बिकॉज ये जो हाँ तो अचानक इतना रैली है वो रिटेल बायर्स के ऊपर नहीं है, और अभी लाइक कोई उतना सर्चेस भी नहीं बढ़े थे और ज्यादा लोग भी मतलब बात नहीं कर रहे थे बीटीसी का, बट अचानक जो ये हुआ इट्स मोस्टली अबाउट ईटीएफ्स और इंस्टीट्यूशंस कमिंग इन एंड बाइंग अ लॉट ऑफ हम्म हम्म बीटीसी राइट नाउ एंड हम्म ट्राइंग टू गेट अहेड ऑफ द कर्व, लाइक हम लोग जैसे कर जानते हैं कि हार्वनिंग के पहले गिरता है, सो हम्म एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल, सो सब लोग बहुत लोग शॉर्ट पे भी होंगे, तो उनको लिए हम्म लिक्विडेट हो गया और उनका एक अच्छे प्राइस पे बाइंग भी कर लिया उन्होंने, हम्म बिकॉज दे नो कि आफ्टर हार्वनिंग सबको पता है कि बीटीसी बढ़ता है। सो पीपल आर वो लोग चाह रहे हैं कि जो पैटर्न पहले हुआ है उसको ब्रेक करे ताकि दे कैन गेट अ हम्म। बीटीसी एट अ वेरी गुड रेट राइट नाउ। आई थिंक हाँ, दैट इज आल्सो अ फैक्टर। स्पॉट ईटीएफ का जो इवेंट है ना, ये काफी एक मेजर इवेंट है जो कि फंडामेंटली जो है काफी कुछ चेंज किया है क्रिप्टो मार्केट में। तो इसके वजह से पैटर्न जो है वो रिपीटेटिव एकदम एग्जैक्टली तो नहीं होगा। यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ, पहले इथेरियम का एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। इथेरियम का अभी जो है वो रेजिस्टेंस जोन के पास है 3500, ठीक है? यहाँ से एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है, और ये जा सकता है 32,000 3200 या फिर 3100, इसी रेंज के मतलब नजदीक जाके वहां से फिर से बाउंस बैक कर सकता है ये। तो ये जब तक 35,000 को क्रॉस करके नहीं चला जाता है ऊपर, तब तक आप लोग इसमें संभाल के या फिर पोजीशन साइज भी अगर रखोगे तो कम पोजीशन साइज रखो, ज्यादा मत रखो वहां पे। हाँ, मैं जो चीज कह रहा था कि आप लोग देखिए, मार्केट जो है अभी फिलहाल वो बुल मार्केट है, राइट? तो बुल मार्केट में आप देखोगे कि मेजर जो मार्केट मूवर्स है, जैसे हो गया आपका बीटीसी, इथेरियम हो गया, और दो तीन मेजर कॉइन्स है, वहां पे पहले रैली आया। मैं एक्चुअली स्ट्रक मतलब पैटर्न का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वहां पे पहले रैली आता है, उसके बाद ऑल्ट्स में रैली आना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देखो कार्डानो, कहाँ गया कार्डानो भी है? हाँ, कार्डानो, राइट, कार्डा। ये जैसे देखो आप 10% का रैली दिया, एवैक्स रैली दिया, तो लिंक अभी उतना ज्यादा रैली नहीं दिया है, ठीक है? डॉट थोड़ा बहुत रैली दिया है।
फाइलकॉइन, एल्गोरेंड, ये सब थोड़ा बहुत करके रैली दे रहा है। और इंचिंग ईएनजी जो है वो भी थोड़ा बहुत रैली कर रहा है। तो आप लोग देखोगे कि ऑल्ट्स कॉइन में जैसे पहले आप लोग का मान लो कि बीटीसी में कुछ पोजीशंस है, ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। बीटीसी में अगर आपका पोजीशन साइज बड़ा है, तो आपको अगर लगता है कि इसके बाद यहाँ से फॉल आ सकता है, तो फिर आप वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो 50% या फिर 40-50% आप प्रॉफिट बुक कर लो वहाँ पे। और वो जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट दे के आप ऑल्ट्स में इन्वेस्ट करो। तो फिर ऑल्ट्स में जब रैली आएगा ना, तो जल्दी 2x 3x कोई बड़ा बात नहीं है ऑल्ट्स के लिए। जैसे आप थीटा का लास्ट 4 डेज का गेन देखोगे तो काफी ज्यादा है, हम्म, राइट। इसको अगर हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं, 150% का गेन दिया है थीटा, राइट। वो भी कब से दिया? 140% ये दिया है 12 फेब के बाद से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑल्ट्स का जो गेन है ना, वो 2x 3x 4x बुल मार्केट में मतलब बहुत कम है। कुछ कुछ तो 10x 20x हो जाता है। तो बीटीसी का जो है, बीटीसी का दौर खत्म हो गया, जाएगा, ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं करेगा, लेकिन ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा मूव करेगा। तो फिर आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो बीटीसी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके ऑल्ट्स में डाल सकते हो। तो उससे जो आएगा ना आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो आएगा, प्रॉफिट जो आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बन के आएगा। तो दैट्स द स्ट्रेटेजी एंड दैट्स इट फ्रॉम right. माय साइड। So, Shavik, I think we have got a question. So, before we jump off, we'll have a question from Ritik. He's asking, like, will there be any correction before halving? So, what is the levels that you are expecting BTC going down and having a correction? And what are the levels that you suggest that you look out for? Yeah, in the downside, we can look after, like, we can look at the levels around 50K, 48K. Okay. I Mhm. won't call it correction. I would rather call it profit booking or minor profit booking. Okay. Below that, I think it's very difficult to go as long as there is no, I mean, there is no major news. Okay. So ये एक सीन है। और अपसाइड में जैसे उनका कहना है कि मेजर फॉल आएगा कि नहीं, मेजर फॉल तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही आएगा यहाँ पे। और अपसाइड में जो है वो पोटेंशियल, वैसा कोई टारगेट तो हम लोग दे नहीं सकते हैं एज पर द रूल्स। बट यहाँ से काफी अच्छा, मतलब अपसाइड में आप देख सकते हो काफी Yeah. अच्छा For, बीटीसी में। for me, I don't think like कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा मेरे साइड से हार्वनिंग के पहले, बिकॉज अभी तो आप इंस्टीट्यूशन देख से सकते हो मेजर कि पोजीशंस वगैरह लेते हैं ना, तो फिर वहां हाँ, पे सेंटीमेंट पूरा मार्केट का खराब होना चाहिए, तब जाके आ, होगा। और मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मैक्रो, ठीक है। यहाँ पे यूएस में फेड जो है इस साल 4 रेट हाइक करने वाला है, ये हिंट दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होगा। अगर रेट कट होता है यहाँ पे, तो फिर क्या मार्केट में होता है, ये आप खुद भी जानते हो रेट कट के टाइम पे क्या होता है। तो वही है कि रेट कट होता है तो फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आता है तो वो दूसरे दूसरे फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे सिनेरियो है। right. So I think there will not much correction from our end, but yeah, it's not like a financial advice. This is like more of personal opinion. कि अभी जैसे मैं बोल रहा था कि फाइनेंशियल और बिटकॉइन हार्वनिंग के पहले पीपल आर ट्राइंग टू मतलब गेट इट एट अ वेरी गुड रेट, और सबको पता है हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन बढ़ता है। सो institutions are playing their own game, retailers are playing their own game, and normal whoever is watching us, they should have a game strategy for themselves, being an investor and trader, and एक्चुअली you shouldn't listen to anybody else. सर, एक्चुअली यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत मतलब करीबी दोस्त है। कुछ फ्रेंड्स के वगैरह, मतलब कुछ फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन चलते रहता है कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है।
तो मैं जब भी देखता हूँ ना कि ये जो सवाल ऋतिक के मन में आया है, ये मेरा काफ़ी सारा फ्रेंड्स के बीच में भी आया है। उनके मन में भी आया है ये सवाल। तो वो पूछते हम्म, रहते हैं कि अभी मतलब अभी थोड़ा वेट कर जाता हूँ, अभी थोड़ा-सा देख लेता हूँ क्या होता है। तो ये लोग जब बीटीसी 27 पे था, 30 पे था, 35 पे था, तब भी ये वेट ही कर रहे थे और आज भी ये वेट ही कर रहे हैं। और हो सकता है कि बीटीसी 80 भी चला जाए तब भी ये वेट ही करेंगे। तो जो राइट। लोग वेट करते हैं ना बिना कुछ किए, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना। यहाँ पे कोई टाइम नहीं कर सकता है कि हम लोगों ने मतलब जब बोलना स्टार्ट किया था तो बिलो 30 के इट वाज़ ऑलवेज़ अ गुड टाइम। उसके बाद राइट। धीरे-धीरे 40 आया। 40 में बहुत दिन तक स्टे किया, उसके बाद न्यूज़ आया, न्यूज़ के बाद 50 चला गया स्पॉट ईटीएफ का। फिर उसके बाद करेक्शन हुआ। 40 क्लोज़ टू 40, 40 से थोड़ा नीचे भी चला गया और 38,500 जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि हम्म, वहाँ पे मेरा एक छोटा-सा ट्रेड का पोज़ीशन मैंने लिया था जिसका स्टॉप लॉस रखा था जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पज़ 38,000 तो उसको हिट नहीं किया। 38 500 से ही वो घूम के चला गया वापस। तो यही होता है कि आप मौका आपको बार-बार मिलेगा, लेकिन आप अगर बिना कुछ किए बैठे रहते हो या फिर उस मौके को हाथ से जाने देते हो, तो फिर प्रॉफ़िट कैसे बनेगा? जैसे अभी 60 राइट। के आस-पास है, तो अभी अगर मोटा-मोटा तरीके मतलब इस तरह से देखा जाए कि पिछला बार बुल रन का जो हाई था, उस हाई के हम्म, नीचे अभी भी है बीटीसी। तो ये एक मतलब पॉज़िटिव चीज़ जो है ना, वो ढूँढने का कोशिश करो। कहाँ से कहाँ गया ये तो एक सीन है, कहाँ से कहाँ गए ये तो फैक्ट है। लेकिन अभी भी उस हाई को क्रॉस नहीं किया है। अगर आप खुद सोचो कि उस हाई को अगर क्रॉस कर देता है, तो फिर क्या होगा? बड़ा कांड हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ। तो अभी इट्स अ गुड टाइम। तो उस तरह से आपको लोगों को ट्रेडिंग प्लान वगैरह करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, ना कि एक बार में पूरा। राइट। एवरेज प्राइस अगर किसी का 50 के नीचे होगा, मैं स्टिल कहता हूँ कि 50 के नीचे अगर एवरेज बाइंग प्राइस किसी का होगा स्पॉट में बीटीसी में, तो फिर वो काफ़ी अच्छे पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं और पोज़ीशन साइज़ को बस मैनेज करना है अभी, और तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं मेरा साइड ऑफ स्टोरी है कि बहुत लोग जो पहले बुलेट में खरीदे थे अराउंड 50, 55 या 60 के, वो अभी बहुत खुश हुँ। है कि भाई चलो 60 के पहुंच गया तो ब्रेक इवन पे बेच देते। ये सो बहुत गलत डिसीज़न है। हाँ, हाँ, हाँ। सैम ये चीज़ थोड़ा-सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा-सा मतलब टाइम लगेगा इसमें। मैं बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस करता हूँ। कोई एक प मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? कोई एक यूज़र मान लो कि वो लास्ट बुल रन में 60 के पे बाय किया, 55 के पे बाय किया, तो उसका अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, वो अभी निकल जाएँगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा उन व्यूअर्स को कि आप लूज़िंग पोज़ीशंस को होल्ड करके रख सकते हो 2 साल, 3 साल और जब भी आपका वो विनिंग पोज़ीशन बन रहा है, तब आप 2 दिन में उसको निकाल रहे हो। ये क्या बात हुआ? ऐसे थोड़ी प्रॉफ़िट वो होगा। लोग एट लीस्ट इसको वो लोग 6 महीना सोने तो के दो मुर्गी को टाइम। काटते हैं। हाँ, वो लोग सोने वो के वही सोचते हैं मुर्गे ना को कि काट फिर रहे से हैं। अगर नीचे चला गया देखो वो लोग यही सोचते हैं कि फिर से अगर नीचे चला गया तो क्या होगा? अगर आपको उतना ही डर लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा-सा प्रीमियम प्राइस पे करके ऑप्शंस के थ्रू उसको हेजिंग कर लो ना, कौन हम्म। आपको रोक रहा है? राइट? तो फिर आपका कोई मतलब वो डर खत्म हो जाएगा, आप चैन से सो पाओगे रात को नहीं तो वही पता चला कि सुबह उठ के मेरा पोर्टफोलियो फिर से लाल हो गया और फिर से मायूसी। ऐसा राइट। मतलब होता है, बट वही है कि ग्रीड एंड फियर का ही तो गेम है पूरा। थोड़ा-सा टाइम दो, 3 साल जब आप ऐसे होल्ड किए तो फिर 6 महीना इसको दो, एट लीस्ट दो, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाओगे। Right. So, guys, I think we have shared a lot of info about the latest news updates and the overall पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दैट्स देयर इन द मार्केट। सो जो लोग भी हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं वो शायद अभी प्रॉफिट्स पे होंगे, दे आर एंजॉइंग द रन राइट नाउ। बट फ्रॉम माय साइड अगेन अ पर्सनल ओपिनियन, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड गाइज। आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो with institutions coming in with spot ETF coming anytime sooner. Like it's again like Krish says ki it's about a matter of when or not if. So when it come, we'll let you guys know whenever we get an update from the market. But yeah, once all the ETFs are coming in, so all the big guys, all the institutions are putting in money, the retail hype is gonna come very soon after the halving. So
it's a good time to start looking into crypto, learning more about it, and dipping your hands into it. So yeah, do try it out and experiment with things and funds that you can manage. So with this, I It's think time. Yeah, yeah, it's time to control your emotion and stay calm. right, So yeah, that's what you can do in this market. right. So I think that's it from our side, Stravik. Or you have Yeah, anything else that's for the viewers? no. Okay, cool. I think So we'll thank have you some guys for questions from our watching. users and we'll get back to them. Sure, sure. Thanks, Ritik, for asking your questions, and I hope that you guys will keep on asking questions as we move along with this series. So thank you again for watching. Do make sure that you share this with your loved ones who want to invest into crypto. And if you have any requirements for large buying or selling, you can use our platform A2Z Crypto for buying USDT to INR, INR to USDT. And for big deals, you can just contact us and we'll help you. And with this, I think we'll come to the end of the show. Thank you for watching. And from next Thank week, you. we'll come back again, similar timings. Thank you. Bye bye, everyone. Thank you so much. Bye bye. Bye.